Nearly 2 years of COVID has affected India at scale, posing long-term challenges for millions of vulnerable communities. Today, we face an urgent need for the philanthropic community to support the resilience of grassroots NGOs through long-term flexible funding, so that they can survive these uncertain times and continue to serve India's most marginalized and vulnerable communities. Let us hear from the voices of these NGO leaders. कुल मिला के जो रोजगार का मुख्य साधन मजदूरी है और वो भी प्रवास आधारित मजदूरी, तो हर तरह के प्रवासी मजदूरों की जो मजदूरी थी इस ब्लॉक की वो खत्म हुई और घर पे आने के बाद भी इन परिवारों के पास कोई ज़्यादा रोजगार के साधन नहीं बचे जो इफेक्टेड है कोविड के, वो भी यहाँ की कम्युनिटी के लिए रहे और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए वो बच्चे और महिलाएं। तो स्कूल बंद होने से सीधा प्रभाव बच्चों पे पड़ा और एक तरफ तो माँ बाप के पास भी खाने के लिए कुछ था, तो उन्होंने अपने बच्चों को मजदूरी पे भेजना शुरू किया। सरकार ने जरूर ये योजना चलाई थी कि हम ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, घरों में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, तो उस वजह से सिर्फ 3% बच्चे ही पूरे ब्लॉक के, जो गवर्नमेंट डेटा है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि 3% बच्चों को हम पढ़ा पाए इस दौरान। Domestic workers are neither recognized as skilled workers, nor are they valued or their work valued or dignified. They are not considered labor under any of the labor laws. In fact, they are working in everybody's homes, but they're absent from policies across board. So therefore, we think that domestic workers are the visible invisible. Sexual harassment was already an issue with domestic workers, and the informality of work does increase their vulnerabilities and the fear of speaking up about the sexual harassment. And because of the pandemic and because of the pressures of not having a job, they became more vulnerable to quid pro quo forms of sexual harassment. नोमैडिक एंड डीनोटिफाइड ट्राइब यानी घुमंतु जनजातियां भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ी पैमाने पे एक जनसंख्या जो है वो हमारे सामने आती है, जो हमारी नजरों को हमेशा दिखती है, जो कलाओं की और मनोरंजन के माध्यम से हमेशा हमारे आसपास होते हैं। लेकिन जब कोरोना जैसी महामारी का अनुभव होता है तो ये समुदाय बहुत ही ज्यादा संसाधनहीन है, जानकारीहीन है, उस तरह का प्रतिनिधित्व इस समुदाय के पास नहीं है। तो इस तरह के महामारी को जब अनुभव करना हुआ तो इस समुदाय के रोजगार के बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, असंगठित कामगार है, इंडिविजुअल कामगार है, और उस तरह का सोशल और पॉलिटिकल किसी भी तरह का एक स्ट्रॉन्ग और बलबूते के साथ रिप्रेजेंटेशन इन कम्युनिटी का नहीं है। So there is a need for unrestricted funding for organization that will bring in innovation, that will bring in new ways of thinking and new design to work with people, which is often missing. And what happens is when we want to expand, when we want to do new things, we don't have money. So the investors have to really work and look at the organization, look at all the processes in organization, build trust and say, yes, this is the organization which is reaching out to people. We need to support them so that they can do more and more innovative work with the people. That is why that kind of a unrestricted funding is very, very essential. With everything we've heard and learned over the past 2 years, Dasra and Tarsadia Foundation are expanding our COVID relief campaign and launching the Rebuild India Fund. Rebuild is a $50 million fund that is committing 5 years of flexible funding, backed by capacity building support to 100 new grassroots NGOs each year. We invite you to join us on this journey.